हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश बाल भारती लेसन 2.2 नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन्स एज इक्वल। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आपको अगर वार्मिंग अप के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ए है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें ए फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मीन्स द फॉलोइंग। लेसन में से कुछ वर्ड और फ्रेजेस हमें ढूंढने हैं जिसका मीनिंग सेम हो। किसके सेम हो? नीचे कुछ दिए फ्रेजेस और वर्ड्स और कलर्स। लेसन में क्या वर्ड और फ्रेज यूज किया है कलर्स के लिए? तो उसका आंसर है हुएज। B1 है अ पर्सन हु राइट्स द न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। उसको क्या वर्ड यूज किया है लेसन में? तो उसका नाम है जर्नलिस्ट। क्राई ओवर, लैमेंट। एक्सप्लेन इन डिटेल, इसके लिए वर्ड यूज किया है डिस्कस। एबिलिटी एंड इक्वालिटी, इसके लिए पोटेंशियल ये वर्ड लेसन में यूज किया गया है। सेम अवेलेबिलिटी, इसके लिए लेसन में अपॉर्चुनिटीज ये वर्ड यूज किया है। अ पर्सन हु ब्रिंग्स अबाउट द सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस, इसके लिए लेसन में एक्टिविस्ट ये वर्ड यूज किया है। बी है पिक आउट 5 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। लेसन में से हमें 5 कंपाउंड वर्ड पिक आउट करने हैं। इसका आंसर है ग्रैंड मदर, सोशल वर्कर, मिडल एज, रीडिंग रूम, क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर इन योर ओन वर्ड्स। उसमें ए है रीड एंड राइट डाउन 5 पॉइंट्स विच प्रूव दैट टोम्बा लैंथोनाइज फादर firmly believe in gender equality। आपको 5 पॉइंट्स ऐसे राइट डाउन करने हैं उसमें से लैंथोइस फादर जेंडर इक्वेलिटी पे बिलीव करते हैं, उसके अबाउट हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसे 5 पॉइंट्स। आंसर टोम्बा इज husband's supportive of the activities of his wife. He is a social worker who advocates the cause of women. He does not discriminate between a man works and woman works. He shares equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking, and feeding children. He laments over the injustice done on women in society. Question B है in what ways is Ashangbi different from other women of her community? Answer Ashangbi is different from other women of her community. She is women's rights activist. She is a journalist. Is different. Question C है What are the provisions in the Declaration of the United Nations to ensure the equality of men and women? यूनाइटेड नेशन का जो प्रोविजन है उसमें मैन एंड वुमेन इक्वालिटी में क्या डिक्लेरेशन दिया है? आंसर द प्रोविजन इन द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन आर equal access to basic social services including health and education, equal participation in political and economical decision making, equal reward for equal work, and elimination of discrimination and violence against women. Question 3 है Who said to whom and when और why? इसका आंसर है फर्स्ट वन है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज। वर्ल्ड ये फुल इनइक्वालिटी है, ऐसा कौन बोला? टोम्बा। टू होम किसको बोला? लैंथोई को। और क्यों बोला? व्हेन ही इज डिस्कसिंग जेंडर इक्वालिटी विथ हिज डॉटर। आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, ये कौन बोला? लैंथोई। किसको बोली? अशांगी को। और क्यों बोली? When she want to discuss something with her mother. थर्ड वन है It is against the will of good. ये कौन बोला? अशांगी। किसको बोली? लैंथोई को। और क्यों बोली? When she is talking about the subjugation of women.
फोर्थ वन है अवर होम इज फुल ऑफ लव। कौन बोला? लैंथोई। किसको बोली? अशांगी को। व्हेन शी इज डिस्कसिंग, और क्यों बोली? व्हेन शी इज डिस्कसिंग जेंडर इक्वालिटी विथ हर मदर। We can affirm among with United Nations what men and women are equal. ये कौन बोला? अशांगी। किसको बोली? लेंथोई को। और क्यों बोली? When Lenthoi asked her about the provisions available to enable women to express their political and set themselves free from suppression. Question number 4 है We have studied in previous class that pronoun are word used instead of noun. हमने previous क्लास में nouns के instead pronouns word use किए हैं, वो हमने देखे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस के 3 टाइप्स है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Underline the pronoun in the following sentence and name their types. अंडरलाइन किए गए प्रोनाउंस में राइट करने हैं और उनके टाइप्स राइट करने हैं। सो यहाँ पे व्हाट ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का टाइप है और यू पर्सनल प्रोनाउन का टाइप है। सेकेंड वन, इट इज बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो इनइक्वालिटी। इसमें अंडरलाइन किए गए जो प्रोनाउंस है यूर एंड आई, ये पर्सनल प्रोनाउन है। थर्ड वन है दिस इज व्हाट यूर टॉपिक मीन्स। यहाँ पे दो प्रोनाउंस है दिस एंड यूर। दिस ये प्रोनाउन डेमोक्रेटिव प्रोनाउन का टाइप है और यूर ये पर्सनल प्रोनाउन का टाइप है। शी इज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच वाइंड्स अप द माउंटेन। इसमें शी और विच ये प्रोनाउन यूज किए गए हैं और शी का टाइप है पर्सनल, इस प्रोनाउन का टाइप है रिलेटिव। Question number 5. Read the following lines. Imagine it is the beginning of an instance you have experienced. Complete the incident using your imagination. Give it its positive ending. I had often noticed that in my neighbor family, the son was greatly pampered, but the daughter was treated unfairly. I could not bear this, so one day I decided to continue the writing of with your own ideas in about 12 to 15 lines. Okay? फैमिली में डॉटर को अनफेयरली ट्रीट करते हैं, इसके लिए जो आपके मन में जो थिंग्स आते हैं उसको स्टार्ट कर लेना है यहाँ से और इसका एंडिंग हमें पॉजिटिव करना है। ओके, उसमें हमें 12 to 15 लाइन्स राइट करनी है। तो देख लेते हैं। I had often noticed that in my neighbor family, the son was greatly pampered, but the daughter was treated unfairly. I could not bear this, so one day I decided to go and speak to the parents of a children. Being a little girl myself, the parents were a little apprehensive about what would say. I just shared my views politely and said that both the children of the family were God's gift to them. Then, why to treat them differently? Both of them should share the blessing of their parents. The mother of the children was not very convinced, but then when added that maybe she was pampering her son for his bright future, but are we sure that he would be the mother's support? No, he might become arrogant and high-headed. Could see the father eye widen as if he was understanding what said. In a while, he called for his daughter, who timidly came towards him with tears in his eye. He hugged her and said, "You are my angel, a gift from God." The another to put her arms around the daughter. The son came and joined them. It was a wonderful sight and moments for me. 6th वन क्वेश्चन है प्रोजेक्ट का है। क्या प्रोजेक्ट करना है? फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट कलेक्ट quotations or slogans promoting gender equality. Make decorative poster with picture of understanding
woman or sketch or illustration of your choice. With permission, put up the poster in your school surrounding. ओके आपको स्कूल लाइब्रेरी में से या इंटरनेट से आपको कलेक्ट करना है कुछ स्लैगन्स क्वेश्चंस कलेक्ट करने हैं और जेंडर इक्वलिटी के अबाउट आपको कुछ पोस्टर्स मेकिंग करने हैं और स्कूल की परमिशन से यानी कि प्रिंसिपल की परमिशन से आपको पोस्टर्स स्कूल सराउंडिंग में लगा देने हैं ओके for watching video. If you like my video, subscribe my channel, press the bell icon, like करो, कमेंट करो, शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.